પશ્ચિમ રેલવે પર 13 ઓક્ટોબરે આરપીએફ સ્થાપના દિવસની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી। મુખ્ય મહેમાન તરીકે કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ ઉપસ્થિત રહેશે। પશ્ચિમ રેલવેનું રેલવે સુરક્ષા દળ આરપીએફ આગામી 13 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ વલસાડ સ્થિત આરપીએફ પ્રાદેશિક તાલીમ કેન્દ્ર ખાતે પોતાનો સ્થાપના દિવસ ખૂબ જ ઉત્સાહ અને ઉમંગ સાથે ઉજવશે। આ ભવ્ય કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય રેલવે અને માહિતી અને પ્રસારણ તથા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને માહિતી ટેકનોલોજી મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ મુખ્ય મહેમાન તરીકે ઉપસ્થિત રહેશે। પશ્ચિમ રેલવેમાં મુખ્ય જનસંપર્ક અધિકારી વિનીત અભિષેક દ્વારા જારી કરાયેલી અખબારી યાદી અનુસાર આરપીએફમાં આ સ્થાપના દિવસ સમારોહમાં રેલવે સુરક્ષા દળના મહાનિર્દેશક અને રેલવે બોર્ડના અધિકારીઓ સહિત ભારતીય રેલવેના તમામ આરપીએફ अधिकारियों हाजिर રહેશે। कल रेलवे सुरक्षा बल का स्थापना दिवस परेड हम लोग कल मनाएंगे वलसाड़ के आरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर के ग्राउंड्स में। माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी मुख्य अतिथि हैं। इसमें पूरे देश भर के जितने भी आरपीएफ के आईजीज हैं, जो मुखिया हैं आरपीएफ के, वो सारे लोग उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर हम लोग फोर्स का जन्मदिन मनाते हैं। फोर्स के द्वारा जितने अच्छे कार्य किए गए हैं, फोर्स के लोगों ने जो बलिदान दिया है, उन सारे चीज़ों को हम लोग याद करते हैं और प्रतिबद्ध करते हैं कि हम देश की सेवा के लिए, रेल यात्रियों की सेवा के लिए और बेहतर कार्य करेंगे। इस अवसर पे जिन हमारे अधिकारियों को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल, इंडियन पुलिस मेडल या रेल मंत्री के द्वारा जो पदक दिए जाते हैं यात्री सुरक्षा के लिए, ब्रेवरी के लिए, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो सारे दिए जाएंगे। उसके अलावा एक मॉडर्नाइजेशन का हम एग्जीबिशन करते हैं कि अभी तक हम क्या मॉडर्नाइजेशन के स्टेप लिए हैं और फ्यूचर में हम मॉडर्नाइजेशन क्या करने वाले हैं, जिससे कि हम रेल यात्रियों की, रेलवे संपत्ति की और बेहतर सुरक्षा कर सकें। थैंक यू।